अरे नहीं देखो, सेट लेट ट्वाइस। ऐसे कौन सोचता है? Can I just use my phone for a minute? Guys, you wanted. I think beat around एकदम पलट जाए। Oh, you're smiling! You're smiling! What is the answer, sir? What is the answer? Welcome to Alpha Beta Game. Round 1, we'll try to earn some points. Round 2, we'll put those points at stake to double our winnings. And let's see who wins in the end. Alright? Okay. So today's alphabet is D. So all the answers will start from D, the letter D. तो कोई धासु आंसर देते हैं और जीतते हैं, ठीक है? So clap and answer to earn your points. Ready? Clap first, answer later. Yes. Clap first, answer later. We have 10 questions. Clap and answer. All right, let's go. Let's go. Oh, okay. Dropbox. Yes. Dropbox. D से दिमाग चल जाए। Yes, yes, yes. Dropbox. All right, all right. Next one. Ready? Okay. 1, 2, 3. Capital city of Bangladesh. Okay. Denmark. Okay, okay. Huh? Dhaka. Yes, it's Dhaka. D से बस बोल देती हूँ। Sir, तो डेनमार्क चला हाँ, गया। ये हुआ है। जब से कुछ शुरू हुआ D से मेरे दिमाग में डेनमार्क ही चला। I can't think of anything else. Sir, तो डेनमार्क चला गया। Scores फटाफट से रिवाइज करते हैं. Nippon has answered 2 out of 2 at 20. Swati is yet to open her account, still at 0. Ready? Next question, guys. Ready to clap? 1, 2, 3. Name a natural disaster with the letter D. Any natural disaster. Disaster ही दिख रहा है D से। No. Name of a natural disaster. Okay. Drought. Drought is the one. Yes. Good Whoa, job. Sweat, so good. Yeah. सुनामी अर्थक्वेक के आगे नहीं बढ़ पाया कुछ। ठीक है. Sweat, you are at 10 points, 20 points. Let's go to the next question. चलें क्या? Yes, Ready? yes. डर लग रही है क्या? डर लग रही है पॉटर? हाँ? चलो 1, 2, 3. How do we better know this as? Okay. How do you better know this? आंसर नहीं बताना है। No. Oh, board mass. No. Division. Dividend. No. I don't know, D से बोलना है। हाँ, अच्छा, हाँ. D-mass. अरे नहीं देखो. Solve it. I solved it also. हाँ. तो क्या करूँ solve करके? क्या है solution? 12. How do we know better 12 as? It starts with D. Dozen. Yes, it's dozen. I'll give you 5 points because it was going here and there. Yeah. It's dozen. ऐसे कौन सोचता है? Sweat. That's हाँ. Dozen. oh dozen. Oh, हाँ. now I get it. ठीक है. Fun fact बता देता हूँ एक. Okay. Fun fact. So, dozen is one of the earliest number groupings. अभी तो मोस्ट पॉपुलर हम यूज करते हैं 10, 20, 30, 100. बट 12 ग्रुपिंग हम अभी भी यूज करते हैं अननोइंगली मोस्टली. जैसे हमारी घड़ी में नंबर 1 से 12, एक साल में महीने 1 से 12, एक फीट में कितने इंच 12, है ना? तो 12 की ग्रुपिंग अभी तक हमारे लाइफ में चल रही है. बट 12 ही क्यों? व्हाट इज स्पेशल अबाउट 12? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 12? What is? Can we answer? Can we हाँ, answer? यू कैन आंसर. ऐसा कुछ होता है ना, हाथ में गिन सकते हैं। हाथ में 10 उंगलियां भी होती हैं. पर ये ऐसे से जब गिनते हैं तो नहीं फिर 12 15 हो से गए. ज़्यादा हो गए ना? हाँ, फिर 12 ज्यादा हो गए. Oh, then what did I read about 12? हाँ. So the thing is, unlike 10, it has more divisors. तो पुराने ज़माने में you had to divide things. तो 10 के सिर्फ 2 डिवाइजर्स थे, 2 और 5. तो अगर 3 लोगों में बांटने 10 चीज़ें तो मुश्किल होता है, इसलिए 12 की ग्रुपिंग्स में लेते थे. तो अंडे 12 में आएंगे. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड बेकर्स डजन, जिसका मतलब 13 होता है. हाँ. अब बेकर्स के लिए डजन 13 क्यों होता है? हम सबके लिए डजन का मतलब 12, बेकर्स के लिए ऐसा स्पेशल क्या है जो 13 होता है? इन इंग्लैंड बेकर्स हैड टू सेल गुड्स इन डजन, लेकिन एक और कंडीशन होती थी कि उनको सर्टेन वेट मीट करना है कि दर्जन चीज़ें दूंगा आपको, पर एटलीस्ट इतने ग्राम क्यों नहीं चाहिए दर्जन मिला के. अगर उससे कम हुई तो पेनल्टी लगेगी. तो पेनल्टी हटाने के लिए कहते थे गलती से एक हिस्सा ऊपर नीचे हुआ तो एक 13 डाल दो.
कि ये सेफ साइड रहेगा कि 12 तो मतलब वेट तो कम से कम हो ही जाएगा, तो इसलिए बेकर्स डजन इज 13. मैं मेरा तो एक वो है पिटिशन, टेलर स्विफ्ट शुड मेक अ सॉन्ग ऑन इट समटाइम ऑन बेकर्स डजन. Swifties assemble. Scoring once more. Sweat, you're at 15. Nippon, you are at 20. Very close. Ready for the next question? Sad, अभी तो bet करना है. Ready for the next Yes. question? Yes. Are you also ready? Let's go. 1, 2. Name the actor who played Harry Potter. Daniel Radcliffe. You also know the answer? It's Daniel Radcliffe. एकदम मिलीसेकंड का फर्क होगा. Oh man. Daniel Radcliffe. Ready for the next question, guys? Yes. Ready with your claps? Yes. Okay, 1, 2, 3. Identify this person. Singer. Arey. Dua Lipa. Dua Lipa. Arey, swag, you're a champ. She is Dua Lipa. She has won 3 Grammys, by the way. Oh, she's pretty Huh. great. Yeah, hot, huh? Great. So scoring, you are at 25. Yes. Nippon, you are at 30. We are 6 questions down. 4 more to go. Oh To goodness. earn your points, and then we'll have to stake them to double our winnings. Okay? Ready with the claps? Yes. Next question comes on your screens. Now, what is the capital city of Ireland? Okay. Dublin. टेलर स्विफ्ट ने परफॉर्म करता है. It is Dublin. याद है मुझे. Oh, ठीक है. Ready, ready? 3 more questions to go, Sweat. Yeah. You can do it. Yes. Ready with the clap? Yes. 1, 2, 3. How do we better know as digital versatile disk as? Yeah. It's a thing. We better know. It has something else. Oh. Okay. DVD. It's DVD. मैं सोचा इतना तो टेक पे दिमाग चलेगा नहीं हमारा, कुछ तो इजी दिया होगा. Uh, It's right. It is written right there. Yes, it was right there. It's digital versatile disk. It's DVD. We have used our entire lives. Oof. ठीक है. Last 2 questions. Hmm. सर को टेंशन वाली बात नहीं है. हाँ, अभी तो Sir. स्टेक्स भी करना Sir, है. I know I will Ready? take bad bets. ठीक है. Ready? Yes. Okay. Next questions on your screen. Anytime now. Be ready with your hands. 1, 2, 3. What mythical creature is often depicted as a large flying reptile with wings and scales? फिर भूल के मैं डी से करना है ना. ड्रैगन. It is dragon. फीनिक्स. बार फीनिक्स सोचते ताली बजाने वाली थी. Last question of this round, and then we'll go on to the stakes round, the beta round, the bet round. ठीक है, Sweat. Yes. Nippo. I think बीटा राउंड में एकदम Change पलट हो जाएगा. जाए. It will all change. Last question. Yes. Read it carefully and then answer. ठीक है? Okay. हाँ. On your screens, right now, name a book that has used all the available words. Dictionary. Yes, it is dictionary. What a question, यार. What a question. Good one. What an answer, Sweat. मुझे लगा था इसमें So थोड़ा सा fast. टॉप सीटर भी हो जाएगा. My God, कैसे पता था ये? कैसे draw dictionary? हाँ. All right. मैं डीमास में अटक. You will be entering next round with 60 points to stake, and you will be entering the next round with 35 points to stake. Are you ready, guys? Yeah. Ready to see the categories? Oh man. Ready to D the categories. ठीक है, चलो. We have movies, football, especially for you, geography, actor, animal, and word origin. Oh my God, and I have to go first. Yes, you have to go first, Nippon. Pick a category. पहले ना सब में से D के आंसर. Oh God, I want to take word origin, but I'm scared. अगर मैं नहीं कर पाई तो. Let's start with geography Okay. for 15 points. 15. 20 ज़्यादा लग रहा है, 10 कम लग रहा है. 15. So after this, either you will be at 45 or you will be at 75. Let's reveal the question behind geography. Nippon, are you ready? Are you ready? Okay. So here we go. The 3 clues.
It is a landlocked salt lake bordered by Jordan to the east and Israel and Palestine to the west. Clue 2. It is one of the world's saltiest bodies of water, 10 times as salty as the ocean. Clue 3. It is the world's deepest hypersaline lake in the world. उन्होंने लेक क्यों बोला एंड में ऐसे बार बार कल भी दिस इज डेड सी I said lake twice. Nah. Just because ताकि Dead Sea ना बोल दे. The answer was a lake, man. ऐसी ब्रैगिंग राइट्स के लिए सोचने दे. हाँ. बट दामादम इधर की लेक. It is Dead Sea. गुड़गांव की दमदमा लेक दिख गई मुझे इतनी देर. Yes. It is Dead Sea. It is a lake, but. हाँ. Good job, Nipu. डरा दिया पूरा. निपुण. You are at 75. Oh. Sad. कुछ बड़ा गेम खेलना पड़ेगा इस बार अपने को. Oh my god. बड़ा खेलना पड़ेगा, बड़ा. देख हाँ मतलब अब रिस्क लेना ही पड़ेगा. हाँ. 20 Okay. for अभी इसकी मूवी कैसे है चॉइस सेंस की स्वैट अमृत मूवी तो मिलती नहीं. बिल्कुल नहीं मिलती है. तो कुछ फुटबॉल है ना, फुटबॉल तेरे लिए रखा मैंने. फुटबॉल मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा. डी से एक फुटबॉल प्लेयर आ रहा है पर मूवी पता नहीं होगा कि नहीं होगा. अभी नहीं लेती. मूवीज के साथ स्टार्ट करते हैं. Movies. For 20 points. So after this question, you will either be at 15 or at 55. Okay. Yes. Oh. Chalo. Are you ready? 1, 2, 3. Clue 1. It is a science fiction movie directed by Denis Villeneuve. Clue 2. 2 parts of this movie has come out and is based on a 1965 novel of the same name by Frank Herbert. Clue 3. It was considered unfilmable after so many failed attempts to make a movie based on the novel. Is it Dune? It is Dune! Damn. Yes! Sad, you took great bet, man. Great bet. Ooh. So you're at 55 and you're at 75. Just 20 points ka difference. Oh my Bravo, God. bravo. Nipun, you have to buck up now, okay? Geography and movies are gone. I really want to take word origin यार. मुझे डर लग रहा है मुझसे बनेगा नहीं. What if I'm just good at making word origin questions and bad at answers? So on that note, I will just take 10 rupees का risk on word origin. अबे go big. 75 में 10. मैं word origin से हार गई ना What the मैं. hell? थोड़ा अपने स्कोर की तो इज्जत कर. तू जाना -10 ही होगा. I'll still be like very close to you. चल चल. So you'll either be at 65 or you'll be at 85. Okay? Yeah. ठीक है, you want to go with word origin? Yeah man, Okay. I'm so sure मुझसे नहीं बनेगा. You don't want to take football? I'll leave it to her, no? हाँ? ओ नहीं तेरे ले ले अगर तुझे पता नहीं है तो. नहीं, एक मुझे ही नाम भी पता है मुझे. same ही है हमारा है. तो I don't think मोहित को भी कुछ और पता है. पता नहीं क्यों इसने फुटबॉल को भी डी से डाल दिया. ए से फुटबॉल होता तो मैं आर्सेनल बोल देती. हाँ, That's it. तो भाई मैंने इसलिए डाला ना क्योंकि वो ये चल. फैन है ना फुटबॉल की. Let's see. हाँ, चलो ठीक है. निपुण, word origin, your favorite topic for 10 points. अरे डर लगता है खुद का फेवरेट टॉपिक होता है हम कम स्टिक कर रहे हैं because we don't fail at our favorite things. ठीक है, चले let's go. चल ठीक है. Clue 1. The first half is a prefix that makes the whole world to mean the opposite of the second half. So वैसे like dislike. ठीक है, तो first half is the prefix. Clue 2. Now the second half of this word comes from the Arabic word sifr, which means nothing or zero. Clue 3. अब second half की meaning की बात कर रहा हूँ. The second half of this word originally meant to convert a meaningful word into numbers so that it has no meaning. That's why it was taken from sifr, because it means nothing and zero. And the first half is Oh, I think I know. and the first half is just a prefix. तो second half का origin दिया हुआ है, second half का meaning दिया हुआ है. Oh God, Mom, I'm so blank. Starts with D. हाँ. Yeah, Starts with that- D, of course. Starts with D. Starts with D. Think of prefixes. Think of the origin word. Try to like find meaning. D. This. In Clue 3. I don't think so. D. So now I've heard this origin sifr और भी किसी word का वजह से.
Second half meant convert a meaningful word into numbers so that it has no meaning. Sorry guys, मुझे feel हो गया तुम्हें word origin में क्या feel होता है. Taste of my own medicine. हाँ, नहीं देख, दोबारा से देख. I really don't know, but I just say like demonetize. Why do you think it's demonetized? I don't know. First half तो मुझे D लग रहा है, not Okay, dis. okay. I can't think of dis तो तूने example use कर लिया और D can do that. Okay. सिफर से कुछ बन नहीं रहा. Monetize लग रहा है थोड़ा zero से कुछ आ रहा है. But नहीं. सही जा रही है शायद. नहीं, Okay. I have no other. Yeah, that's not the right answer. Oh no. ऐसे ही just for bragging rights, you want to take a guess? मैं तो सिफर से मैं तो जा रही थी थोड़ा उस पे. जा. पर मैं तो फिर डिफर पे जा रही थी, पर वो that does not mean. सिफर से D क्या हो ठीक सकता है. है? तो ठीक है. तो basically Nippon loses 10 points in word origin. So Nippon is at 65. Swati is at 55. Now let's try to make this word. Okay. So clue 1, you're right. Dis नहीं है क्योंकि मैंने dis use कर लिया. ठीक है. So it's D. Then clue 2, the word origin from sifr. ठीक है. Let's keep it in our heads. Clue 3, कोई मीनिंगफुल वर्ड को नॉन मीनिंगफुल नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है. Decode. हाँ, you are very close. Delete. Now think of this word that sounds like sifr. Decode. D. Sounds like. बोल इसको. कोड की जगह सिफर बोल. Decipher. यही तो बोल रही थी कब से. Decipher. Decipher. Oh my god. Decipher. Oh my god. Good, I only put 10 points. हाँ, तो अब असली वाला एक ओरिजिनल पजल है आपके लिए. Using this table, decipher this and tell me in the comments कि इसका मतलब क्या है. ठीक है. So Nippon, after not deciphering this thing, you are at 65. So you are at 55. Just 10 points का difference है. How many points do you want to bet and on what category? Word origin में हार गया मैं. चल swipe. There are 3 categories left: football, Go for actor, football. and animal. I'll go for actor. I think she'll go for actor. I think ये Hollywood दे देगा. मुझे इतने नाम नहीं पता होंगे. ये बताइएगा Hollywood कि Hollywood. No. I'm just trying to. चल 20 for animal. 20 for animal. So either after this, either you will be at 35 or you will be at 75. Wow. 10 more than Nippon. Alright, so for animal. फुटबॉल तो तुझे ही छोड़ूंगी स्वेट. ठीक है, तो ये भी हो सकता है फोन कि फ्रेंड कर सकते हैं. चलो एनिमल के लिए स्वेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Clue 1. A flightless bird native to the island of Mauritius, which is east of Madagascar in the Indian Ocean. Clue 2. Nobody alive today has seen this bird and is understood mostly from paintings and descriptions. Clue 3. Most accurate painting is considered to be one by Mughal painter Ustad Mansoor, who painted a live bird from the bird collection of Mughal Emperor Jahangir located in Surat. So you have to think of a bird which is flightless, has not been seen by anybody who is alive today. बट असली में था ना. Yes, it's not a fictional bird. नाम पॉपुलर है. Very popular. तुझे पता है? अरे. Oh my God. Extra pressure डाल दिया. I can't think of any other. हाँ, जब मैं थोड़ा सा. हाँ, take your time. One eternity later. ड्रैगन. A bird? फ्लाइटलेस बर्ड में भी. Dragon? वो bird तक नहीं है. वो तो reptile है. No, Sweat, no. That is wrong answer. It come down to 35, but the hope is all not lost. Do you know the answer? Dodo. It's dodo. एक ही extinct bird. दिमाग में ही नहीं हाँ. आया ये तो.
नाम सुना था तूने डोडो? ऐसा लग रहा है मुझे. ओ ऐसा Not something which I would Oh. know. No. mostly Extinct. dodo is like this prime example of human based extinction किसी एनिमल का, कि हम उनको अपने नेटिव प्लेसेस इतना दूर दूर ले गए, वो साथ में प्रोक्रिएट नहीं कर पाए, एंड देन इवेंचुअली दे वेंट अवे. हाँ, but animal में history ले आया यार तू. हिस्टोरिकल एनिमल है. गाइस यू ऑल टेल. ठीक है पर ना? स्वेट अगर वो उसने हिस्ट्री लिखा होता तो भी तो फॉर श्योर सिलेक्ट मैं नहीं करती history. यू गुड एट हिस्ट्री. I'm not good at history. पता नहीं क्यों ये image बना रहे हो मेरा. हम थोड़ी बना रहे हैं. तुम्हें लोग बनाते रहते हो कि हिस्ट्री स्वाति तो जीत जाएगी. यू टेल गाइस यू टेल. हाँ. अरे ठीक है, यार तो अब से नई इमेज है. स्वाति इज अ फुटबॉलर. ठीक है, अब से फुटबॉल की बात करेंगे हम. हर सवाल फुटबॉल का स्वाति के पास जाएगा. Movies. मूवीज तो oh my god and the categories left are actor and football. एक्टर एंड फुटबॉल. तो तू ले सकता था. चल चलो, निप्पू निप्पू. ले. Football तो ऐसे लिखते certainly I don't know anything. Okay. I will go for actor हाँ, for how many points? because it's the last question and I want to take. I'll go for 30 points. Oh my god, 30 points. So- Nippu, if you are wrong and next question Swed is right, then she wins because you will either have 35 points after this question or you'll have 95 points after this question. अरे यार actor The plot thickens. not my strongest. चलो. ठीक है, actor Nippu, are you ready? Okay, here's the question. Clue 1. अबे यार धर्मेंद्र के अलावा I cannot think of anything. you His guys. films have grossed over $3.5 billion in North America and over $10.5 billion worldwide, making him one of the world's highest grossing and highest paid actors. Clue 2. But before acting, he was widely regarded as one of the greatest professional wrestlers ever. Clue 3. He is also the founder of Tirimana Tequila, which is valued at approximately $3.5 billion. Clue 1 and Clue 2 are really important and Clue 3 is like a trivia. I do know but somebody उसने tequila बनाई हो but Hmm. his name. I think you know the answer this I time. know कौन है नाम बस नहीं आ रहा है. अब wrestling से I can हाँ. see Dara Singh but this is not Dara Singh. So D से नाम चाहिए, D से. This actor. Downey Jr. Robert. Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Tom Cruise. 30 points लगाए हुए. I cannot think of anybody. कोई D से सोच भी जाए ना. I'll just take the name. I No? don't have Oh. some Daniel. I don't know. Okay, so time's up, Nippon. You are at 35. So now your only hope to win is that Swet doesn't answer her question. ठीक है? But Swet, before you tell me the name of the person. Do you know the name of the person? Think कौन I तो know. देख कौन रहा है? हाँ, उसको guess करवा, देखते हैं क्या guess कर पाती है. bald guy. हाँ, bald guy. Oh God, is Nickname this? Oh God. Also known as Dwayne the Rock. हाँ. If I am. हाँ? Dwayne the Rock Johnson. Yes. It's Dwayne Johnson. The Rock. मुझे The Rock आ गया था but असली नाम को याद नहीं आ Oh रहा था. God. Wrestler. नहीं, ठीक है, rest ठीक है. is fine. Swag. We are the last leg of our thing. Oh my god. Nippon is at 35 and you are at 35. So एक चीज तो श्योर है, ये गेम टाई नहीं हो सकता क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो स्टेक बेट पे लगाना ही लगाना है, चाहे वो 5 पॉइंट क्यों ना हो. चाहे 5 लगाओ या 35 के 35 Oh लगाओ, तो my एक ही रिजल्ट होने वाला है. God. Either you will win or you will lose. And the topic left is football. And the topic left is मैं भाग football. रही थी जिससे. हाँ, स्वैग देखा कैसे कैसे किस्मत का सर तो आज चक्कर. आर्सेनल जर्सी में होता. Oh, it would be either a Oh my winning moment. God. So तेरा कैटेगरी तो फुटबॉल है. Now bigger question is, तेरा 35 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स लगाना है? तू चाहे 1 पॉइंट भी लगाएगा तब भी हार और जीतेगा. तू बीच पे लाइन में खड़ा I है. do anything, sir. Do anything.
चल मैं 5 points. सिर्फ 5? Do you not want to go all in? No, it doesn't matter. Doesn't matter, तो ब्यूटी के लिए करना all in. चल 5 points. So either you will be at 30 or you will win at 40. Sweat. Football. Sweat. Can I just use my phone for a minute? No. No. Only one I think that we can think of. D से है ना? Let's see. But let's see player है भी कि नहीं, कोई टीम नहीं से क्या टीम. चलो. चल भाई. चलो. चल. Let's go. English professional footballer known for his exceptional free kick skills. Clue 2. His career spanned 20 years with some of the most successful clubs in the world: Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy, Paris Saint-Germain, and the England team, which he captained for 6 years. Clue 3. He's married to Spice Girl Victoria. Oh, you're smiling! You're smiling! What is the answer, sir? What is the answer? David Beckham. It is David Beckham! Sweat! You win, girl! You win! There's a crown! And I was not even thinking about David Beckham. Diego Maradona. तूने जैसे इंग्लिश बोला है छोड़ो ये तो शायद अर्जेंटीना फिर याद आ रही है. फुटबॉल स्वैट. Wow, Sweat, good job. क्या फ्री किक मारी है तूने लास्ट So में? now Swat is not history expert, football. फुटबॉल एक्सपर्ट. गाइस, अब से हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं बोलेगा. फुटबॉल का सवाल इधर आने दो प्लीज. Football and movies. हाँ, फुटबॉल एंड मूवीज सब इधर आने दो और बिना फोन अ फ्रेंड के करेगी, ठीक ये है? भी बिना फोन अ फ्रेंड हाँ, के किया है. very good, very good, very good. All right, guys, that's the show. Thank you for coming along with us. Yeah. If you do not want to miss the next episode, the letter E, subscribe to this channel. All right, bye.